equation of plane equation of plane passing through a point A whose coordinates are x1, y1, z1 and perpendicular to a given vector. Right? Equation of plane passing through a point and perpendicular to a given vector. This is any plane. A is any point on the plane A is any point on the plane coordinate of A are x1, y1, z1 and is any vector perpendicular to the plane, right? N vector is equal to ai cap bj cap plus ck cap, right? अगर हम A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सपोज करते हैं A, then vector A is equal to x1i y1j plus z1k, right? n एक वेक्टर है perpendicular to the plane, so n is a normal vector and A vector is position vector of any passing point. Then vector equation of plane is given by r minus a dot n vector is equal to 0. Vector equation of plane is equal to r minus a dot n, right? And Cartesian, here A is position vector of passing point and n vector is vector perpendicular to the plane, that is normal vector. And Cartesian equation of plane will be अगर हम n वेक्टर को देखते हैं ai plus bj plus ck, n वेक्टर में नॉर्मल, n is a normal vector perpendicular to the plane and direction ratio of normal are a, b and c. प्लेन के perpendicular जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है a, b, c. That's why this vector is ai plus bj plus ck. And x1, y1, z1 are coordinate of passing point. So in this case, Cartesian equation of plane will be a into x minus x1. A is direction ratio of normal and x1 is coordinate of passing point, plus b into y minus y1. Here b is second direction ratio of normal and y1 is coordinate of passing point, plus c into z minus z1 is equal to 0, right? This will be Cartesian equation of plane, right? So ये इक्वेशन हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए पासिंग पॉइंट होंगे एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होगा, राइट? इससे पहले में हमने प्लेन की एक इक्वेशन की है, दैट इज r डॉट n कैप इज इक्वल टू d. वो इक्वेशन हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास n वेक्टर होगा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा, राइट?
सेकेंड इक्वेशन जो हमने की है वेक्टर इक्वेशन r माइनस ए डॉट एन, ये इक्वेशन तब अप्लाई होगी जब हमारे पास एक पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा एंड नॉर्मल वेक्टर होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, राइट। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज find vector and Cartesian equation of plane that passes through. Fifth question is vector and Cartesian equation of plane that passes through a point. प्लेन जहाँ से पास करता है उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज फॉर ए पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट आर 1 0 -2 1 0 -2 and normal to the plane n vector is I plus j minus k. n vector is equal to I vector plus j vector minus k vector. Coordinate of A are 1 0 -2 and normal to the plane is this. हमारे पास A पॉइंट है, A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज डिनोटेड बाय वेक्टर A. वेक्टर A विल बी I प्लस 0j माइनस 2k. A वेक्टर क्या होगा I प्लस 0j माइनस 2k. देन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन n हमारे पास है, A हमारे पास है. सो इस इक्वेशन को फाइंड, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए हमारे पास A और n होने चाहिए, दोनों हमारे पास है. सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r minus a dot n is equal to 0, right? Implies r vector minus, what is a vector? A is I plus 0j minus 2k dot n. N vector is I plus j minus k. This is equal to 0. This is vector equation of plane, right? बुक में जो आंसर है उसमें यहीं पर छोड़ा हुआ है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहिए. लाइक आर डॉट दिस, यहाँ पर डॉट है इन दोनों के बीच में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर एंड दिस इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू वेक्टर. सो व्हेनेवर दिस वेक्टर विल मल्टीप्लाई विद दिस वेक्टर, सो इट विल बी आर डॉट आई प्लस जे माइनस के, राइट. माइनस ये इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ भी होगा, सो इट विल बी आई प्लस 0j माइनस 2k डॉट आई प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट के बाहर जो वेक्टर है ये दोनों के साथ r के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हुआ और सेकेंड वेक्टर के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हुआ. सो r डॉट आई प्लस j माइनस k माइनस दिस इज, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज 1 1, यहाँ पर भी 1 है, 1 into 1 is 1, 0 यहाँ पर 1 है दैट इज 0, -2 and -1 प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू 0. राइट. सो by simplifying this, r dot I cap j cap minus k cap minus 3 is equal to 0. This is vector equation of the plane, or you can write it as r dot I plus j minus k is equal to 3. This is required equation, right? हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसका एक पासिंग पॉइंट गिवन है एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन है. So this is this equation. Next is कार्टेशियन इक्वेशन. अगर हमें इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी हो देन हम r को चेंज कर सकते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के में, और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास एक कार्टेशियन इक्वेशन आएगी, राइट. अगर हम डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो इन दैट केस हमारे पास क्या होना चाहिए, ए मीन
बी सी, ए बी सी हमारे पास होने चाहिए। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास होने चाहिए। एंड x1 y1 एंड z1 यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट। सो x1 y1 z1 हमारे पास हैं, दीज आर corresponding to x1 y1 z1. x1 is 1, y1 is 0 and z1 is -2, coordinate of passing point. And ABC, that is direction ratio of normal, normal के direction ratio क्या है, 1 1 -1, a is equal to 1, b is equal to 1 and c is -1. Direction ratio of normal are also we have, right? So Cartesian equation of plane will be a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. Now what is a? A is 1 into x minus, x1 is what? 1. What is b? B is also 1 and y minus y1. y1 is 0 plus c into c is -1, z minus z1. z1 is -2, so it will be +2. This is equal to 0. So simplifying this, we have x minus 1 plus y minus z minus 2 is equal to 0, or we can say x plus y minus z minus 3 is equal to 0. Right? This is Cartesian equation of the plane. So जब कभी भी आपके पास एक passing point given है and direction ratio of normal given है, आप इस मेथड से कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं एंड पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की हेल्प से और नॉर्मल की हेल्प से हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज equation of plane passing through 3 non-collinear points. Equation of plane passing through 3 non-collinear points. Equation of plane passing through 3 non-collinear points. Suppose A is any point whose coordinate are x1, y1, z1. B is any point x2, y2, z2. C is any point x3, y3, z3. A, B, C are 3 points, right? This is any plane and this is A point, B point and C point. A, B, C are 3 non-collinear points on the plane, right? Position vector of A, position vector of A point with respect to origin is pos vector A. Then A vector A will be x1i plus y1j plus z1k. Position vector of B point with respect to origin is vector B. Vector B is x2i, y2j, z2k. And position vector of C point is vector C, that is x3i plus y3j plus z3k, right?
Then formula for Cartesian equation of plane. Cartesian equation of plane is given by determinant x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0. This determinant on expanding will give Cartesian equation of plane. And next is vector equation of plane. Vector equation of plane is given by r vector minus a vector. R vector minus a vector. This a vector is position vector of passing point A, right? Dot b vector minus a vector, b minus a cross, b minus a cross c vector minus a vector is equal to 0. Vector equation of plane will be r vector minus a vector dot b minus a cross c minus a is equal to 0. This will be Cartesian equation of the plane. Fine. So इनके हेल्प से हम वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं. एक चीज यहाँ पर जो कम नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, पॉइंट्स शुड बी नॉन कॉलिनियर. पॉइंट्स हमारे कैसे होने चाहिए? नॉन कॉलिनियर होने चाहिए. बिकॉज इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन नो यूनिक प्लेन कैन पास थ्रू दीज पॉइंट्स. इन तीनों पॉइंट्स से बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं. सपोज वन पॉइंट इज एयर, सेकंड पॉइंट इज दिस, थर्ड पॉइंट इज दिस. ये तीन पॉइंट एक ही लाइन पे हैं. सो दिस प्लेन कैन पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स. Also, this is another plane which can pass through these 3 points. This plane can pass through these 3 points, right? So more than one planes can pass through 3 collinear points. So no unique plane will pass through this, right? If points are non-collinear, then only unique plane can pass through these planes, right? So for finding equation of plane, point must be non-collinear, right? अगर पॉइंट्स आपके पास कॉलिनियर होंगे, व्हेन यू विल फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यहाँ पर ये दो रो आइदर विल बी सेम और विल बी 0 0. दोनों रो या तो डिटरमिनेंट की 0 हो जाएंगी या दोनों रो एक जैसी होंगी, राइट? सो कोई इक्वेशन आप फाइंड नहीं कर पाएंगे. इसी तरह से अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके पास 0 आएगा, राइट? और आप कोई इक्वेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे. ओके, इन एक्सरसाइज जो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें ऐसा ही है. वहां पर आपको जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं. सो इन कॉलिनियर पॉइंट्स से पास करते हुए किसी यूनिक प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड नहीं कर सकते. जब आप वैल्यूज को यहाँ डालेंगे तो डिटरमिनेंट की दो रो या तो एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, अदरवाइज दे विल बी परफेक्टली 0, राइट? एंड इन सेकंड केस दिस प्रोडक्ट विल बी 0, राइट? So this into 0 is equal to 0. Everything is 0. Left side is 0. Right side is 0. No equation can be find out, right? So let us do 6th question. Second part of 6th question. Question number 6th. Question number 6, part B, right? Okay. In 6th question we have 3 points. One point is 1 1 0. 1 1 0. B point is 1 2 1, 1 2 1, and C point is minus 2 2 minus 1, minus 2 2 minus 1, right? These are 3 points. आपको एक equation of plane find करनी है which passes through these 3 points. So first point is corresponding to x1, y1 and z1, right? Second point is x2, y2, z2. Third point is x3, y3, z3, right? ABC are 3 points. So equation of plane
equation of plane x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0. This will be equation of plane, right? So applying values x minus, what is x1? x1 is 1, y minus y1, y1 is also 1, z minus z1, z minus 0. Then we have x2 minus x1, x2 is this, x1, x2 minus x1 is this minus this, it will be 0. This is y2, y1, y2 minus y1, so it will be 1, z2 minus z1, this minus this is 1. In similar way, x3 minus x1, this is x3, x3 minus x1, this minus this, minus 3, this minus this, 1, this minus this, minus 1. This is equal to 0. This implies x minus 1 into this minus this, minus 1 minus 1, minus y minus 1. Expanding this determinant, y minus 1 into इस कॉलम और फर्स्ट रो को हम छोड़ देंगे, this into this, that is 0 minus 3 into 1 minus 3, so it will be plus 3, plus z minus 0, z minus 0 into, leaving this row and this column, we have 0 plus 3, 0 plus 3 is equal to 0. This implies this is minus 2 into x minus 1 minus, this is 3 into y minus 1 and this is 3 into z minus 0 is equal to 0. Solving this, minus 2x plus 2 minus 3y plus 3 bracket open किया plus 3z is equal to 0. This implies minus 2x minus 3y plus 3z. Now 2 plus 5, this is 5, right side में अगर shift करते हैं it will be minus 5, right? Taking minus common, it will be 2x plus 3y minus 3z. यहाँ से माइनस कॉमन लिया, उसको हम राइट में ट्रांसपोज कर सकते हैं, सो इट विल बी 5. माइनस कॉमन लेने से हमारे पास ये इक्वेशन आई, 2x plus 3y minus 3z plus 5 minus 3z is equal to 5. This is Cartesian equation of the plane. So Cartesian equation आप इस वे से फाइंड कर सकते हैं. अगर आप वेक्टर मेथड फॉलो करते हैं, सेकंड वेक्टर इक्वेशन में फाइंड करनी है और वेक्टर मेथड आप फॉलो करते हैं तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पासिंग पॉइंट्स, जो हमारे 3 पासिंग पॉइंट ए बी सी, उनके पोजीशन वेक्टर्स हमें पता होना चाहिए. सो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट, वेक्टर ए. दिस विल बी i plus j plus 0 k, i plus j plus 0 k. Vector b will be i plus 2j plus k, that is position vector of point b, i plus 2j plus k. And vector c is equal to, vector c will be minus 2i plus 2j minus k, minus 2i plus 2j minus k. This is vector c. Now we have all a b c, that is position vector of all the 3 passing point. So first of all we find b minus a and c minus a. What will be b minus a? Vector b minus vector a. It will be this minus this I plus this minus this j plus this minus this k. So I minus I, 0i, this minus this plus j, this minus this plus k. That is second vector. C minus a. C minus a vector is equal to, C minus a vector is this minus this, minus 3i, this minus this, C minus a
plus j, this minus k. C minus a is this, right? Now we have to find b minus a cross c minus a. B minus a vector cross c minus a. This is equal to I j k 0 1 1 0 1 1 minus 3 1 minus 1 minus 3 1 minus 1 is equal to, right? It will be I into this into this minus 1 minus j into minus 0 minus plus 3 plus k into this minus this 0 plus 3, right? So this is minus 2i minus 3j plus 3k, right? b minus a cross c minus a, ये वैल्यू हमने फाइंड की. Now vector equation of plane will be r minus a dot this. Therefore vector equation of plane, it will be r minus a dot b minus a cross c minus a is equal to 0. This will be vector equation of plane. R minus, what is a? A is I plus j plus 0k. A is I plus j dot, what is value of b minus a cross c minus a? Is minus 2i minus 3j plus 3k. Minus 2i minus 3j cap plus 3k cap. This is equal to 0. Now इसको हम r के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. r डॉट माइनस 2i माइनस 3j प्लस 3k, राइट? r डॉट दिस वेक्टर माइनस दिस डॉट दिस वेक्टर i प्लस j डॉट माइनस 2i माइनस 3j प्लस 3k माइनस 2i माइनस 3j प्लस 3k is equal to 0. This will be vector equation of plane. Further simplifying, r dot this, r dot 2i cap minus 3j cap plus 3k cap is equal to, now coefficient of I is 1, 1 into this, it will be minus 2 minus 3, राइट? यहाँ k का कंपोनेंट 0 है, जो 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0, राइट? सो r डॉट माइनस 2i माइनस 3j प्लस 3k प्लस दिस इज माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट? सो कार्टेशियन मेथड फॉलो करके हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं. वेक्टर मेथड फॉलो करके हम वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. Equation of plane in इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होगी?
x axis, y and z. Suppose this is any plane which is cutting intercept a on x axis. प्लेन ने x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस कट किया है दैट इज a, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस कट हुआ है दैट इज b, एंड z एक्सिस पे जो डिस्टेंस कट हुआ है दैट इज c. सपोज दीज आर थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज ए प्लेन, राइट. दिस प्लेन इज कटिंग ऑल द थ्री एक्सिस, राइट. थ्री एक्सिस को कहीं ना कहीं जरूर कट करेगा. जहाँ दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन ने यहाँ तक जो डिस्टेंस कट किया दिस इज जेड एक्सिस, दिस पॉइंट इज ओरिजिन. ओरिजिन ये जो डिस्टेंस कट हुआ है बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन, प्लेन ने इस एक्सिस को यहाँ पर कट किया है. दिस डिस्टेंस इज नोन एज जेड इंटरसेप्ट. दिस इज वाई एक्सिस, ओरिजिन से यहाँ तक प्लेन ने एक्सिस को यहाँ कट किया है. दिस डिस्टेंस इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट. सिमिलरली एक्स एक्सिस को जहाँ कट किया है this distance is x intercept, that is a, this distance is a, this is b, this is c, that is intercept made by the plane on different axes, right, or abc. In this case equation of plane is x upon x intercept. X intercept is a, so x upon a plus y upon b, y upon y intercept, that is b, plus z upon z intercept, that is c. X upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. This is intercept form of the plane, right. X upon x intercept होगा, y upon y intercept and z upon z intercept. Eighth question, equation of plane passing through. Seventh question is find intercepts cut off by the plane 2x plus y minus z. 2x plus y minus z is equal to 5. Find intercepts cut off by this plane on different axes, right. So first of all हमें find करना है कि इस plane ने different axes पे क्या distance cut किए हैं. So first of all हमें गिवन इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना होगा. इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड में हमारे पास 1 है, तो हम अपनी इक्वेशन को ऐसे ढंग से चेंज करेंगे कि राइट साइड में क्या हो 1. सो उसके लिए हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं, राइट. डिवाइडिंग द थ्रू आउट बाई 5, इट विल बी 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, राइट. इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन है उसके राइट साइड में 1 है, हमारी इक्वेशन में भी राइट साइड में 1 है. नाउ वी कैन राइट इट एज x अपॉन, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z क्या होने चाहिए, राइट 1, ठीक है, डिवाइड बाई ABC. सो इट कैन बी राइट एज 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1, राइट. Now this equation is in intercept form where a is equal to x intercept is 5/2, b is equal to 5 by intercept is 5 and c is minus 5. Intercept on different axes are these. Next 8th question. Question number 8 is find equation of plane within intercept 3 on y axis. Question number 8. Find equation of plane with intercept 3 on y axis. With intercept 3 on y axis and parallel to ZOX plane. This is x o y z. हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है. That plane is making intercept 3 on y axis. Y axis पे कितना डिस्टेंस कट कर रहा है, 3 यूनिट, राइट. Mean plane is passing through this point and parallel to ZOX. ZOX plane के साथ parallel है, right. ZOX plane के साथ parallel है तो हमारे प्लेन ऐसे होंगे and this plane is cutting intercept 3 on y axis, right. इस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, यानी कि ये प्लेन का पासिंग पॉइंट हो गया. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं,
0 3 0, right? This is passing point of the plane, suppose A. Now plane is cutting intercept 3 on y axis. This is x axis, this is y axis, this is z axis. Plane cutting intercept 1 2 and 3, 0 1 2 3. प्लेन यहाँ से पास कर रहा है एंड दिस प्लेन इज ZOX प्लेन, राइट? ये हमारा प्लेन क्या है? ZOX. यहाँ पर हमारा ZOX प्लेन होगा. जिस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो ZOX प्लेन के साथ पैरेलल है, यानी कि ऐसे है, राइट? एंड y एक्सिस के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि ZOX प्लेन y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ZOX प्लेन के साथ y एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है? सो जो प्लेन ZOX के पैरेलल होगा y उस प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर होगी, राइट? सो हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ZOX से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. y एक्सिस उसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर, राइट? सो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज j कैप. यूनिट वेक्टर j कैप क्या होता है? j कैप इज यूनिट वेक्टर इन direction of y axis, right? So j cap is perpendicular to the plane and is a unit vector. So n cap से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि प्लेन का नॉर्मल टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन n cap is equal to j cap. यहाँ पर जो j cap है वो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, सो उसको हम n cap से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? एंड दिस इज ए पासिंग पॉइंट. Now this plane is at 3 unit distance from the origin. Y axis is perpendicular to ZOX plane. Plane यहाँ से 3 unit distance से पास कर रहा है. So this is perpendicular distance of ZOX plane from. This is 3 unit distance. This point is origin. Plane is perpendicular to this Y axis. So Y axis का long जो distance होगा that is perpendicular distance of plane from origin and which is 3. So हम कह सकते हैं D is equal to 3, राइट? अब हमें D दिया हुआ है, n कैप है. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय r डॉट n कैप इज इक्वल टू D, where n cap is unit vector perpendicular to the plane, D is perpendicular distance from origin. इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. r डॉट n कैप इज j कैप इज इक्वल टू D is what? D is 3. दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. अगर हमें इस इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इट विल बी आर वेक्टर. आर वेक्टर को हमें चेंज करना होगा xi प्लस yj प्लस zk, राइट? डॉट j इज इक्वल टू 3. सो इट विल बी 0x, क्योंकि यहाँ x का कंपोनेंट नहीं है, y इंटू 1. y इंटू 1 is equal to 3. So y is equal to 3 will be equation of plane, Cartesian equation of plane, right?